So I couldn't help but look over their heads for greener pastures. And alas, what do I find? Shanghai में हाई कम और हाई फाई ज़्यादा है. The technological advancement. और हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी कम और घुटना टेक्नोलॉजी ज़्यादा है. फुटबॉल बनते हैं, बनाते हैं और वर्ल्ड कप में भिजवाते भी हैं. फिर फुटबॉल खेल क्यों नहीं पाते? चलो कोई बात नहीं. फुटबॉलर्स नहीं तो ना सही, फुटबॉल ही सही. वैसे भी, to be quite honest, more than the football, I enjoy watching the handsome players, the adrenaline, the hormones. Oof, it's just such a rush. I am looking forward to seeing Iran beat the United States in football. वैसे तो when Nawaz darling was PM ना, मैंने तो उसे बहुत कहा था कि नवाज जान, we should also have a team and then send them to FIFA. Guess what? He started laughing as I've told him a latifa. But then I realized that his laughter wasn't actually a laughter. It was a cry. He told me, he said, he did not have any idea where to find the balls. मैंने कहा जान, यही बनती हैं हमारे पंजाब में, वो भी एक्सपोर्ट क्वालिटी. वो बेचारा एक्सपोर्ट क्वालिटी में इतना उलझा कि खुद को ही एक्सपोर्ट करा दिया. बिजनेसमैन है ना. He did not want to be a major burden on our economy. He wanted a bigger one, befitting his size. Anyway, tragedies in my life. God, they've inspired Hollywood directors to make films. अब Mission Impossible 3 की थीम को ही ले लीजिए. बेवा हुई, शादी करना चाहती थी, नहीं हुई. सेंसिटिव हूँ, गुर्बत का खात्मा देखना चाहती थी, नहीं देख पाई. आइडियलिस्ट हूँ, डेमोक्रेसी को परवान चढ़ते देखना चाहती थी, लेकिन वहाँ भी नाकाम रही. और सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये कि उस दिन मिशन इम्पॉसिबल 3 के प्रीमियर पे इनवाइटेड थी, देखने जाने ही वाली थी कि बिजली चली गई. मेरी नहीं, घर की. और मैं वहीं बैठी रह गई. Tom got so upset. Tom Cruise. Anyway, परवेज भाई ने भी MI3 का प्रीमियर नहीं देखा. He's more concerned about the cruise missile than the Tom Cruise missile. वैसे between you and me, I find the latter much tempting though. I've heard कि अच्छी फिल्म है. By the way, my sources tell me that Pinky is dying to watch this film. Not this film, but another one. It's a classic. Return of the Native. हाय जानीस, आप लोग तो जानते हैं कि मैं हर वक्त कनेक्शंस मिलाने के चक्कर में रहती हूँ. इसीलिए आज मैंने अपने यहाँ एक ऐसी शख्सियत को दावत दी है जिसके साथ आई फील द स्पेशल कनेक्शन. इसकी वजह यह है that both of us share the same views on many things. और जहाँ हमारे views नहीं भी मिलते, once he views me, trust me, he'll be of the same view. So step right in. Anand Patwardhan. Welcome to Pakistan and welcome to my drawing room. So tell me, how are you finding Pakistan? I love it. I've been here many times and each time is a pleasure. Really, but these days I'm always trying to find Pakistan, but I'm having such difficulty, darling, only sharing with you. I hope all this load shedding hasn't bothered you too much. Oh, I'm in a hotel, so they put the generator on immediately. हाँ, लेकिन हमारे हमेशा से तारीकी नहीं थी. बहुत रोशनी भी रही है और इंशाल्लाह फिर रोशनी लौटने वाली है. तुमने डॉक्यूमेंट्रीज और वो भी इतनी हार्ड हिटिंग डॉक्यूमेंट्रीज, and I know it's not as maybe well paying in terms of money as the big Bollywood flicks. But why did you opt for this strange, difficult path as a filmmaker?
It happened by accident. I was a student in America at the time in 1970, and the Vietnam War was going on at the time, and in my university we were fighting against the war. And I grabbed a camera from the theatre department and I filmed anti-war protests. You know, Anand, मुझे नहीं पता अभी तुम पाकिस्तान आए हो, तुम्हें पाकिस्तान अच्छा ही लग रहा होगा. मुझे नहीं पता कि तुमने कितना पाकिस्तान देखा, but you know, after coming to my drawing room, trust me, इस वक्त पूरा पाकिस्तान तुम्हें देख रहा है और यकीनन बहुत खुश भी है कि हमारे इतने बड़े और अच्छे मेहमान हमारे पास हैं. You know, you come to Pakistan, you view Pakistan, you come from India. What similarities do you see between the two countries, politically, socially, visually? See, the first time I came, it was a big surprise because, as you know, that the first time I came was soon after the nuclear tests, and we had a movement we still have called the Pak India Forum for Peace and Democracy, and for the last 12 years, this movement has existed in the face of opposition by the governments at the time because we've had wars and Cold War. You know, but how has that really changed the status quo between the two countries? At one level, people think that it brought stability, but I totally disagree because 1 year after the nuclear tests, the Kargil war happened. So people were saying that now that the two countries have nuclear weapons, they won't use them, obviously, and so they won't go to war because there'll be a fear of nuclear war. But that was not the case. They still had a Cold War. I mean, they had a small war on the border. You're passionate, you're sensitive, you're honest, you know, you're just a good soul. और मुझे लगता है कि हम दोनों में इतनी similarities हैं. कहीं हम बचपन में घूम के मेले में बिछड़ तो नहीं गए थे, आनंद? हो सकता है ना? कहीं हम बचपन के, you know, I feel somehow that we're twins separated at birth. I can so relate to you. I can so relate India and to you. Pakistan. You know, I know to the two countries. और फिर कारगिल जैसी बात हो जाती है. You know, कारगिल में किल होती है, कारगिल में किल होती है. You know, tell me, you know, like I've had views of how the Pakistani side viewed Kargil. I mean, you know, lives were lost on both sides, really. You know, how does India view the entire Kargil episode? Well, they viewed it as an intrusion, as a betrayal, as, you know, someone invading the country, and a lot of nationalism and jingoism took place in India during the Kargil war, as it does with any war. I mean, every war to every country is a righteous war. And nobody sees war as anything but the fault of the enemy. And so it was in India as well. You know, Jan, मैं तो ये सोचती हूँ कि what have we gained and what have we lost? हमें तो बैठ के हिसाब किताब करना चाहिए, seriously. And I feel that if both of us, people on both sides, were to actually think, I think it's been mostly lost, really. Obviously. टूटी सड़कें आपके यहाँ भी होती होंगी, ड्रेनेज प्रॉब्लम्स आपके यहाँ भी होती होंगी, बिजली के मसाइल आपके यहाँ भी होते होंगे. So why is it that when we both share almost the same views, yet we can't somehow find peace? It's a failure of the politicians. It's a failure of the political class that for more than 55, ever since independence, that we've had so many wars and we've not been able to solve basic issues. And but I think that superpowers also have something to do with it. It's not just India and Pakistan. It's also we play out the games of other powers. I think we buy weapons from America, both countries. We make them rich and then we fight each other. I know, Jan, but you know, all this is so upsetting. By the way, on a happier note, you know, Yash called the other day. बहुत पीछे पड़ गए हैं. There's some film जो नहीं लिखवाई है. Now Shahrukh supposedly is on his case that he's only going to act in that film if, of course, Nazi को cast करें वो. अब वो phone करके मेरे पीछे पड़े हैं. But Jan, I don't know. I mean, what would you suggest? Should I be in Bollywood? Absolutely, yeah, definitely. है ना? हाँ. But मैं कभी-कभार हैरान होती हूँ. मैं सोचती हूँ कि जिस तरह इंडिया है और जिसका मैं एक क्रेडिट आपको ज़रूर दूँगी. You know, very intelligent and very, well, I must say, in the sense that through their films, through Bollywood, they've actually been able to change a lot of the perception or create a certain perception about their country. How come, and I just want to know, I mean, I've heard that in media, which is obviously the backbone of the new India today, it is represented by 78%
of the people from upper caste and Brahmins are running the media while they represent only 8% of the total population? Yeah, that is the tragedy of India. India is a very caste-based society, and the privileged people, of which I confess that I am one, have always had these privileges for the last 5,000 years. I mean, and so it is the creamy layer that benefits, that gets primary school education, good schools, good colleges, and now when, for instance, the government is trying to make amends by having a reservation policy for people of lower caste, the elite is up in arms. मैं ये सोचती हूँ कि पीने का पानी नहीं है, पानी पर एक दूसरे से, I mean, I feel that it's criminal and I so agree with you. How can we spend money on arms? But Jaan, एक बात है, माफ करना, we display arms too, you know, but you display such more arms, you know, naked arms on all the channels, all the time, you know. Yeah. I mean, that's not fair, really. Those arms I'm quite happy about. Well, darling, trust me, many of us here are very happy about those arms too. You're a strong man. And I like men who are strong. Where do you get your strength from? I don't think I'm a strong man. I just do what I enjoy doing. But you have strong convictions. Yeah. हाँ, वो मैं बचपन में देखा करती थी, डाबर का च्यवनप्राश दूरदर्शन पे आता था शायद. हाय, मुझे थोड़ा सा भिजवा दीजिएगा, वो यहाँ नहीं मिलता ना. तो I think that might help. डाबर का च्यवनप्राश. Very nice. अच्छा, as an Indian, you have traveled to Pakistan, you have seen Pakistan, you have a political view, you are interested in Pakistan. How do you view democracy in Pakistan? Do you feel that Pakistan में democracy है? My Parvez bhai is quite, I believe, popular in India. मैं तो बहुत तारीफ़ें सुनती हूँ. मेरी friends मुझे इंडिया से फ़ोन कर करके कहती हैं कि तुम्हारे परवेज़ भाई आए हुए हैं. We love the way he talks, we love the way he walks. मैंने कहा अच्छी बात है. तो how do you sort of view democracy, or I think that Pakistan is probably in a transitional phase. I don't think that it's a democracy as yet, in the full sense. I'm not here to prescribe what Pakistan should do, but I do believe that, yeah, I think that one of the problems that I see here, and I might be out of place saying this, but I think that posing the fact that people who want modernization in Pakistan are being opposed by religious fundamentalism, and this seems to be the opposition between those who support America and those who support religious fundamentalism. I think that this is actually a wrong opposition. You know, and I agree with you, Anand. अभी आप मुझे बहुत सीरियस उस पे ले गए अपने साथ, देखे अपना मेरा हाथ थाम कर. लेकिन मैं ज़रूर कहूँगी कि especially after 9/11, we have seen a rise really in extremism when you come to think of it. And somehow, I mean, I'd agree with you, I'd blame the US policies a lot on that. Yeah. And when you see Islamic extremism rising on one side, to counter that, you will see the Hindu militancy or extremism. The same thing, yeah. You know, that's fine. But you know, what about Kashmir also? Anand, what about Kashmir? No. I mean, thousands of people have been killed in the valley of Kashmir also. No, I think that if you believe in democracy, you believe that everybody has a right to determine where they want to be. And I think that that should be a right for everyone. You know, and just to tell you something, Gandhiji, I found him to be one of the greatest leaders in subcontinent, and I truly respect Gandhiji's philosophy, his vision, and you know, उनका जो एक vision था अहिंसा का और peace का और non-hostility का, वो कुछ बदला सा लगा after he passed away, and in modern contemporary India today, जहाँ पर वो अज़ाइम नज़र आते हैं जो उनकी teachings के खिलाफ जाते हैं. And you know, I have to quote a little story. I went to, you know, the USC, the University for Spoiled Children in America. They keep calling me in, you know, rich kids, for lectures and seminars. Of course, I go and represent South Asia there. So I'm going to recommend you for a lecture there also. Anyway, so वहाँ पे मैं गई और वहाँ पे इसी चीज़ पे बहस हो गई with young students, you know, और कश्मीर के ऊपर.
And I turned around and told one of the kids कि ये गांधी जी ने कहा था खुद कि कश्मीर Pakistan should belong to Pakistan, you know, and that kid got up and he started using abusive language for the very father who created or who gave India a vision, and not just India but to a large extent Pakistan also. I think he's the founder that way, if you come to think of it. And In fact, Gandhi didn't believe, and both Gandhi and Khan Abdul Ghaffar Khan from this region, from northwest frontiers, didn't, for them, partition itself was a betrayal. So by the time partition happened, they were in shock. And in fact, Ghaffar Khan thought that Gandhi had betrayed him also because he agreed you know, to somehow partition. I feel Anand also मेरी तुम्हारी जैसी तो नहीं नज़र चीज़ों के ऊपर और इतनी मेरी इन डेप्थ नॉलेज नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इंडिया कश्मीर को उनका जो ख़ुद मुख्तारी का हक है, राइट टू प्लेबिसाइड दे दे और उनकी ओपिनियन को रिस्पेक्ट कर ले और एक दफ़ा जब ये चीज़ें सेटल हो जाएं तो देन मे बी वी कैन मूव टूवर्ड्स द you know, India or Pakistan that you proposed of, where we can actually maybe years down the road think of having a single currency and open borders and respect each other's sovereignty and work hand in hand as partners really. Honestly, I don't think that solving one single problem solves all the problems. I think that these are things that people, when they have this kind of nationalistic attitude, they'll find some reason to fight, unless you tackle it at a much deeper level than one particular problem. आपने कश्मीर देखा आनंद? मैंने नहीं देखा कभी. आपने कश्मीर नहीं देखा? नहीं. फिर ज़रूर देख लेना, क्योंकि लोग कहते हैं कि सिर्फ कश्मीर मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है. ज़रूर जाके देखना कश्मीर. Khair, anyway, coming back to the non-serious things now in life, I think. Acha, tell me, I mean, what kind of films do you yourself enjoy watching? I actually don't see a lot of films. I see films rarely. I mean, occasional Bollywood film, like Munna Bhai. Actually, you like MBBS. that? Yeah, I love Munna Bhai. Yeah. बोले तो क्या पता था? I thought that was so cute, Yeah, really. हाँ. yeah. अच्छा बताओ, जिंदगी में सिर्फ काम, मकसद, ऑब्जेक्टिव्स ही रहे या मोहब्बत भी की कभी? हाँ, बहुत बार. बहुत बार. Not really. अच्छा, not really. No, in the sense, yeah. Come on, Anand. Come on, you can talk to me. I'm a friend. Yeah, no, meaning those are, yeah, that obviously I'm 56 years old. So it must have happened. I'm completely with you on that, and I think no country, and I'd like to see a nuclear-free zone, darling. But you know, ज़्यादा खतरा हमें, वही मैंने कहा ना, nuclear bomb से नहीं है. हमारी लड़कियों को ज़्यादा खतरा तुम्हारे शाहरुख खान से है. हाँ, कुछ भी हो जाए, उसको कभी ना भेजना यहाँ पर. You know, फसादात हो जाएंगे, लड़ाइयाँ हो जाएगी, you know, and then poor Nazi won't be able to save him and protect him. हाँ, मेरे कंधे पे थी ना बोझ डालना. But anyway, I'm happy that Sonia, Sonia's party did well. अभी तो आपके elections आने वाले हैं शायद आपके मुल्क में भी. अभी अरसा है election आने में. Did well in the sense, yeah, they're in power, and I'm happy that the BJP is not in power, but I'm not actually happy with what the government is doing. Really? I'm not happy with the fact that we have got into bed with the United States. We have celebrating the fact that we have a We did the exact same thing, darling. Yeah, I know, and that's a bad example to follow. I know, darling. I don't know whether this can be said or not. But you know, if we can share, if the two of us can share a husband, why can't we learn to live with each other in peace? You know. But anyway, yeah. Coming to that, how would you compare Congress, that is the Gandhis, really, with the BJP? I think on the communal front, things are slightly better, but on the economic front, I'm not so happy at all, because I think that we're basically surrendering our sovereignty. We're allowing multinationals to control our economy completely. We celebrate Coca-Cola and Pepsi-Cola and all of that stuff, and we're forgetting the basic rights that ordinary Indians should have. शेरो शायरी से कोई दिलचस्पी है आपको? हाँ, मुझे उर्दू इतनी नहीं आती, आप सुनाइए. हाय, मैं तो आपको कहने वाली थी कि आप मेरे लिए कुछ ये सुनाइए.
इतनी मेहनत करने के बाद, इतना सज धज के बैठने के बाद, इतना तो हक बनता है ना मेरा। नहीं, मैंने सुना आप अच्छा अल्लाह, गाती हैं। आप तो बड़ी कंजूसी से काम ले रहे हैं आनंद जी। कब से आए बैठे हैं, कब से आए बैठे हैं, और तब से इंडिया, पाकिस्तान, न्यूक्लियर, न्यूक्लियर, अनक्लियर। गॉड, व्हाट अबाउट मी डार्लिंग, व्हाट अबाउट मी? हाँ आनंद? Yeah. Hi, Anand, you are so sweet. Really, in fact, I was going to say, what was I going to say? Men are strong and women are sweet. Strong and sweet. What's strong and sweet? No, I don't know. I don't know what's strong and sweet. Well, firm and Anand. It is, I love the name Anand. Actually, it just sounds so nice, Anand. It's very poetic. I think it's beautiful. Did you get a chance to meet Meera when she was in Bollywood? No, I didn't. Hi, you never met Meera? No, I never. Hi, you would have been you've been so delighted, really. Meera is a darling. I'm sure she must have heard about her. Of course, though. I know who Of Meera is, course, yeah. Meera is lovely. But you're not into Bollywood at all, are you? No, but I do know some people in Ah, Bollywood. important I'm not people? into Bollywood. I never made a film with them. But we share sometimes the same lab. We used to before I started making video rather than celluloid. You know, I feel that, but you just said now that, people in Bollywood, now that some of our people, after hearing this now, they'd be really interested in knowing you. Because यहाँ पे तो जिस मैं लड़की को देखती हूँ, उसको इतना शौक है, लड़के को, आजकल एक्टर्स को इतना शौक है तुम्हारी इंडियन फिल्मों में काम करने का. But अभी इंडिया की फिल्मों को यहाँ इजाज़त भी मिल गई है. They've been allowed to exhibit in Pakistan. Have you been to see any film here in Pakistan? No, I haven't. Hi, and how long are you staying? Another 2 days. Hi, so please, if you find time, you must go and watch a Pakistani film. So recommend a film. Please, Majajan, you must go and watch that. Okay, I'll do that. In fact, listen, what are you doing tomorrow? Let's go together. I'll take Okay, you. sure, Huh? We go in my royal sort of, my car and my chauffeur, and the red carpet will be rolled out for us, darling. Full protocol, darling. Full Great. protocol. Now that we've made a film, plan to watch a film together, I have a filmmaker from Pakistan here Okay. with me. I thought कि आप इंडिया से आए हैं, तो एक मेरे साथ भी मेरी बच्ची हो जो पाकिस्तान से हो फिल्म मेकर, ताकि मैं सबको दिखाऊं कि हम दोनों मुल्क के जो फिल्म मेकर्स हैं वो माशाल्लाह क्रिएटिव हैं, सेंसिटिव हैं और पैशनेट हैं. आप सबके लिए, आप सबको जान के खुशी होगी that I have the very talented this very talented niece of mine. Actually, her father's been an old friend, really. She's here and I'm not going to make her wait any longer. Step right in, my dear child, Mehreen Jabbar. Mehreen, Meri Jaan, so wonderful to see you, and it's been such a long time. I'm seeing you after such a long time. Yes. कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक. Hi, and tell me that I'm as gorgeous as ever. Much more. Really, I changed my hairstyle. Yes. I thought I'll wear it straight tonight. I've seen you मैंने on कहा TV. straight forward बातें होंगी. आज straight मेहमान आ रहे हैं, तो मैं straight बातें करूंगी, तो मैंने अपने बाल ही straight कर लिए. But darling, another thing you must notice is कि हम दोनों ने एक ही family के color पहना हुआ है. Yes. Our colors, same Yes. family. Yes. So much pink. I mean, really in the air. Really, how's your dad doing? He's good. He's very good. Thank Hi, you. please, मेरे बहुत regards देना, and I know that he's very very good. I think he's brilliant. But मैं तो तबीयत का पूछ रही थी कि तबीयत ठीक ठाक है या नहीं. Let me relax first. अभी Of जरा- course, darling, in my drawing room. बिल्कुल आराम से बैठो. Okay. हाँ, आप भी रिलैक्स करें ना. मैं तो बहुत कोशिश करी थी. अभी तुम आई हो. आप लोग एक दूसरे को जानते हम हैं जानते या? हैं और हम बड़े सीरियस हैं ना, तो हमें जरा सा भी टाइम लगेगा थोड़ा हंसने में. Oh God, Nazi, you're in trouble. Yes. Two serious people and one non-serious, as crazy as ever, Auntie Nazi. But don't call me auntie in front of him also. Okay. अच्छा, so what were you up to? कहाँ थी? You were in New York. जी, मैं न्यूयॉर्क में थी कोई 3 सालों से, तो अभी आई हूँ, 1.5 महीना हो गया.
3 लंबे साल थे वो। आई नो 3 बहुत लंबे साल थे मेरी जान। मैं तो खैर न्यूयॉर्क गए भी मुझे 30 साल हो गए। वो तो जिंदा थे ले जाते थे, अब अकेले तो अच्छा जाती अच्छी नहीं लगती ना जान। यू नो विद ऑल द प्रोटोकॉल देयर एंड नो प्रोटोकॉल नाउ दे वोंट इवन नो हाउ इंपॉर्टेंट अ पर्सन आई एम रियली। बट टेल मी व्हाट वर यू डूइंग, व्हाट वर यू अप टू इन न्यूयॉर्क? क्या होता रहा? कुछ किया, ये कुछ रहा काम किया? हाँ नहीं काम भी किया लेकिन ज़्यादातर एंजॉय किया। वो एक ब्रेक ली कराची से और काम भी किया, काम नहीं छोड़ा। ड्रामे किए, डॉक्यूमेंट्रीज की, वापस आ गई। ब्रिलियंट। फिर वापस बट यू नो मीमी, हमारे यहाँ अभी जो एक मीडिया बूम आया है, यू नो, एंड आई एम श्योर यू मस्ट बी वेरी हैप्पी अबाउट दैट. So many channels have opened, so many channels have opened, really, and we find a serious dearth of creative people, you know, around really to benefit from the mushroom growth of channels. इस क्या कहना चाहिए जो scenario के अंदर, don't you feel that somebody like you is more needed back home? I guess, I mean, this scene is, I have two opinions on this scene. क्योंकि एक तरफ तो बहुत कुछ हो रहा है, एक तरफ काफ़ी बुरा काम भी काफ़ी हो रहा है, especially मैं तो ड्रामे की बात कर रही हूँ. So एक तरफ I was very excited to see कि नए नए channels आ रहे हैं, लेकिन एक quality कुछ, you know, especially हमारे ड्रामेटिक साइड की काफ़ी डाउन हो चुकी है. सो आई डोंट नो कि मेरी वापसी या नहीं हेल्प करेगी. आई थिंक इट्स अ प्रोसेस एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ new people will come out of this process, but it's a double-edged sword. But why do you think that drama is to decline आया है in the standard of drama really, which once was our forte really? ये क्यों आया है? इसकी तो बहुत सी रीजंस हैं. आई गेस एक ये है कि कॉपी हम लोग वही सबसे जो नॉर्मल एक्यूजेशन है कि हम इंडियन सोप्स को कॉपी कर रहे हैं, विच इज़ ओवर द टॉप एक्टिंग और ओवर द टॉप स्टोरी लाइन्स, एक ही तरह की कहानियाँ. दूसरी बात ये है कि क्योंकि एक चीज़ चल जाती है तो बाकी सारे चैनल्स कहते हैं कि हमें यही चाहिए. तीसरी बात कि 50 एपिसोड और 100 एपिसोड हो रहे हैं इंस्टेड ऑफ 13 and 6. सो इट्स मोर लाइक अ फैक्ट्री देन लाइक अ you know, like an individual good product. That's true. I remember that play of yours. क्या नाम था? मरहूम कर्नल की बेटियाँ. You remember that? I remember that one. I thought it was so fabulous. अगर कभी मरहूम कर्नल की बीवियाँ बनाना हो तो you could cast me for one of the two. You know, I'd love to act in that. Okay. But you know, अभी मेहरीन ने बड़ी अच्छी बात की आनंद, वो ये कि इंडिया के पाकिस्तान के अंदर आपने खुद भी अगर आपने टीवी देखा होगा यहाँ पर तो आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि you know we have started wanting to actually at least copy Indian soaps, especially those of Star Plus really. लेकिन आप ये देखें कि इंडिया के like पाकिस्तान के अंदर Star Plus दिखाई देता है और सारे इंडियन चैनल्स दिखाई देते हैं. When I traveled to India, I was astonished to see, really surprised to see कि वहाँ पे सिर्फ PTV को इजाज़त है. No other Pakistani channel is allowed to air really in India. तो फिर उस तरह देखा जाए तो रियल डेमोक्रेसी तो हमारे यहाँ हुई ना. जी. मीमी, तुम अगर फिल्म बनाओगी तो तुम किस किस्म की फिल्म इंशाल्लाह बनाना चाहोगी? Will it be a commercial film? देखिए, I want to make a film firstly जो a story that really moves me beyond, you know, because that's the main reason why I would get into it. अब वो किस तरह की कहानी होती है, वो commercial success होती है या नहीं होती, that will depend later. But for something to move you, I would feel, I would assume, would have to be related to emotions. Yes. Or would to have something to do with emotions really. Yes. Probably not like a standard song and dance film. अभी नहीं बना सकती. I think वो भी एक ज़बरदस्त चीज़ है जो करनी चाहिए, but not right now. I think first film I will make something about something that I can do very well. तो अब वो देखें क्या होता है. अभी प्लान्स तो बन रहे हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर. छोटी सी रिक्वेस्ट मान लो, आना है फिल्म में. नहीं मेरी जान, वो तो मेरी बिल्कुल बेटियों की तरह हो, इतनी प्यारी हो, इतनी खुशी होती है मुझे तुम्हें देखकर. यू नो, यू वर वेरी स्मॉल व्हेन आई सॉ यू फर्स्ट. बहुत छोटी सी थी तो you won't even remember. I do. Hi. Just a bit. But you know, मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी सी है कि जब फिल्म बनाओ ना तो उसमें सॉन्ग एंड डांस प्लीज ज़रूर रखना. मुझे तो इतने अच्छे लगते हैं बच्चे आजकल, स्पेशली बारिश वाला गाना तो होना ज़रूरी है. इनफैक्ट वी आस्क सलमान खान टू डू अ गेस्ट अपीयरेंस. यहाँ प्लीज अपने कॉन्टेक्ट इस्तेमाल करके सलमान खान आनंद साहब को गेस्ट अपीयरेंस कराएंगे. आनंद साहब for Salman Khan is going to be great. That's not such a bad idea, really. Anand, would you like to act in Mimi's film? Yeah, I don't. Opposite me, maybe you and I could do a guest. How's your Hindi? My Hindi is okay. Yeah. Otherwise, I'll teach him, darling.
I can You will? teach. I'm very good with the tongue. Okay. Yes, I can teach him a lot. I have a feeling my first film is going to be in Sindhi, so Sindhi. yes. I can learn Sindhi. Yeah? Haha. I mean, of course. And then I'll teach him. Okay. We'll have lessons And I am together. half a Sindhi, although Are I don't you? speak Sindhi. My mother's Sindhi, yeah. In fact, Oh. my mother's from Hyderabad, Sindh. Okay, I didn't know that. Yeah, they Sindh की moved, मिट्टी came वैसे। before partition. Wow, small सिंध की world. मिट्टी वैसे बड़ी जरखेज है माशाल्लाह मैं तो कहती हूँ सिंध की मिट्टी इतनी जरखेज आप ट्रैवल किया आपने कहीं सिंध outside Karachi where else have I you been? went to Hyderabad. In fact, the house, our family house is still there. It's become a hospital. अच्छा And I went and visited, and the doctor there was very welcoming. He showed me the whole house, and it has been sort of preserved since partition times. Hey, that's wonderful. Mimi, फिल्म बना रही हो ना Inshallah. इंशाल्लाह दुआ करें. हाय मैं तो हमेशा तुम्हारी दुआ करती हूँ तुम बताओ कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या इश्यूज हैं एक तो मेन इशू था कि मैंने रिसेंटली न्यू ईयर पे 2 चीज़ें डिसाइड की थी. एक तो था कि स्मोकिंग छोड़ना, जो छोड़ दी. दूसरा था टीवी छोड़ना, ब्रेक लेना, वो भी कर लिया. तीसरा था टू बिकम अ लिटिल मोर हेल्थ कॉन्शियस बिकॉज मेरी जो मैं काफ़ी चिप्स और जंक फूड की वो हो गई थी आदी इन अमेरिका. टेल मी अबाउट दैट सो आई स्टार्टेड जिमिंग भी शुरू कर दी. सो अभी फ़िलहाल इश्यूज मैं काटने के चक्कर में हूँ एट दिस स्टेज ऑफ माई लाइफ. आई हैव मेड अ लिस्ट, आई ऐसा टिक ऑफ कर रही हूँ. आई नो मैं भी इश्यूज काटने के चक्कर में हूँ टिश्यूज़ भी काटने के चक्कर में हूँ लेकिन इश्यूज काटने के चक्कर में आई थिंक बहुत सारी इश्यूज टिश्यूज़ की वजह से होती है व्हाट आई मीन. टेल मी डार्लिंग कि हमारे यहाँ स्पेशली पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री है लॉलीवुड उसके बीच में और पैरेलल सिनेमा के बीच में इतना वाइड गैप क्यों है? पैरेलल सिनेमा दुनिया का या यहाँ का? नहीं यहाँ का जो तो है ही ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है हाँ. इक्का दुक्का कभी बनती है मतलब, फिल्म बट इन व्यू पॉइंट्स आई मीन आई फाइंड गर्ल्स लाइक Mimi, of course, you've met her, and you know. And then I don't know whether you've had the great privilege of the honor of meeting what's her name, Sangeeta or not. Sangeeta से मिले आप? मैं मिल चुकी हूँ. नहीं आप तो मिल मैं चुकी हैं नहीं. इनको संगीता से भी मिलवाएं. She's हाँ, going to बिल्कुल. give him a lot of tips on how to make good movies. You will really benefit from her great knowledge in filmmaking. Sometimes I can be such a No comment. I'm just अच्छा Anand, tell me, are you working on something these days? No, unfortunately, I've been stuck fighting court cases. Oh, God. So I haven't had the chance to make a new film since War and Peace, really. I know, Yeah, I've but been- वो मुश्किल भारी नाम रखिए ना मुझसे मशवरा करते मैं कभी नाम रखने की इजाज़त ना देती. इतना भारी नाम रख लिया वॉर एंड पीस दोनों ही एबनॉर्मल सी चीज़ें बेचारी. पीस तो खैर अब बेचारा है आई थिंक इट्स जस्ट अ ड्रीम फॉर मेनी. हमारी अल्लाह करे जनरेशंस को मिल जाए पीस. इन न्यूयॉर्क यू वर्कड विद इंडियन एंड पाकिस्तानी एक्टर्स. एटीट्यूड्स में क्या प्रोफेशनलिज्म में क्या फ़र्क नज़र आया? हाउ वुड यू कंपेयर द टू टैलेंट वाइज एटीट्यूड्स वाइज एंड And I was going to say looks wise, Looks darling. But then I thought I would sound too desperate, and I'm not really. Well, maybe I am, but I'm not. हाँ, anyway, हाँ, sorry, हाँ, क्या बात हो गई थी? यार वहाँ एक्चुअली जिन लोगों के साथ मैंने काम किया वो अमेरिकन एजेंट्स थे. एशियन अमेरिकन. American agents? सॉरी अमेरिकन एजेंट्स भी. Oh God, I like 007. Where is he? वो वहाँ के प्रोफेशनली ट्रेंड एक्टर्स थे. सो द डिफरेंस इन एटीट्यूड ये था कि उनको एक्टिंग का अप्रोच फॉर एग्जांपल वाज डिफरेंट बिकॉज अ लॉट ऑफ देम हैड स्टडीड एक्टिंग. जो यहाँ वी हैव वेरी गुड एक्टर्स बट दे आर इंस्टिंक्टिव एक्टर्स और यू नो. तो वहाँ का ये था दे कुड टैप इनटू थिंग्स ड्यूरिंग परफॉर्मेंस दैट मे बी आवर एक्टर्स आर नॉट यूज्ड टू. एक तो वो था. दूसरा पंक्चुअलिटी. आई कीप सेइंग दे वर वेरी कमिटेड टू पंक्चुअलिटी रिहर्सल्स. तो ये मैंने चेंज नोट किया. लेकिन वहाँ एक्टर्स मुझे बहुत कम मिले बिकॉज ज़्यादातर वहाँ इंडियन और पाकिस्तानी एक्टर्स अमेरिकन जो हैं उनको हिंदी और उर्दू आती नहीं है बिकॉज वहाँ पैदा हुए हुए. एंड समहाउ हमारी साउथ एशियन सेकंड जनरेशन अपनी ज़बान भूल गई है. वहाँ चाइनीज़ को चाइनीज़ आती है, वहाँ हिस्पैनिक्स को स्पेनिश आती है, लेकिन हम पता नहीं अपने बच्चों को हमने ना हिंदी सिखाई ना उर्दू. आई डोंट नो व्हाई दैट्स द केस. सो आई फाउंड अ वेरी फ्यू एक्टर्स हु कुड स्पीक फ्लुएंटली. लेकिन जो मिले अच्छे मिले.
I know, but you know, I just realized I'm like Elfie. I act very fast also. Very fast, I tell you. You know, I'm just like Elfie. नहीं, अभी तो मैं समझती हूँ कि लोगों को मिलाने की ज़रूरत है. बिल्कुल तुम सही कह रही हो. और coming to your dad, of course, I have to keep asking. I'm so fond of him. I think he's. You should meet him. हाँ. Well, वो तुम्हारी अम्मा को प्रॉब्लम्स रहती हैं बेटा. मैं अच्छा, क्या हाँ. बताऊँ तुम्हें? You know, not on national television. Can't talk about that. Domestic issues, darling. You know how it is. अभी मेहमान आए बैठे, क्या इंप्रेशन पड़ेगा उनके ऊपर हमारा? अच्छा मुझे बताओ कि मैंने सुना है that you handle most of your dads. You working with him also. हाँ जी. And how is it? How is he? Would you have a boss-subordinate relationship or a father-daughter relationship? Well, that of course you have. He's my boss, so I will definitely have that relationship. But I've also worked with him and my mother for a long part of my life. The Kara Film Festival. Have you attended any of the Kara Film Festivals? Yeah. Of course, but you had two, and Kara Film Festivals, I think, is a brilliant initiative. Really, is a brilliant initiative, and I've been to all the festivals so far. I've thoroughly enjoyed all the movies. You were amongst the people who initially started Kara Film Festival. How did it all come about? It all came about just 3-4 of us बैठे हुए सोच रहे थे. एक कारवान कराची हो रहा था उस ज़माने में. Of course, I remember. तो Yasmin कराची की Ari's, सेलिब्रेशन हो रही brilliant, थी. तो वहाँ से आइडिया शुरू हुआ. So all Hassan and Tahira and Mehreen and a few other people sat together and said कि होना चाहिए कि पाकिस्तान में फिल्म फेस्टिवल ही नहीं है जहाँ इंटरनेशनल फिल्में और अपनी फिल्में भी दिखाने का कोई वेन्यू हो. तो बस इस तरह शुरू हुआ. माशाल्लाह, आई थिंक इट्स ग्रेट. आई लेफ्ट फिर आई मीन आफ्टर 2 years, बट आई हर्ड कि और बढ़ता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है और सक्सेसफुल हो गया है. एंड इस साल 5वां है. हाँ माशाल्लाह, बहुत बड़ा हो गया है कारा फिल्म फेस्टिवल. और आपको एक मज़े की बात और बता दूँ. Sorry, मेरी जान आनंद, I love you so much and you're such a gentleman and I think I like you so much, really I do. But you know, अभी बड़ा की बात की and you know, दुनिया का सबसे बड़ा पीक जो है ना, सबसे बड़ा पीक वो हमारे पास है K2. You know, so in terms of size we beat you. Anyway, so coming back to the Kara, darling, I think I'll assume, मुझे क्योंकि इतनी तो educated नहीं ना, मुझे बताओ कि Kara stands for Karachi or for Karara? I mean, is it the Karachi Film Festival? You know the background. Actually, No, किसी I ने don't. Kara was Karwan Karachi. नहीं, Kara stands for Karachi, but one of the papers did report us as the Karara Film Festival. Really? गलती से. अच्छा, tell me about that. That's exactly it. I think पहला साल था हमारा. और हसन बहुत excitedly आया. I think mostly because of the Hari Mish की तस्वीर that you've put there. I think that's it. You know, darlings, you should have used my photograph. Yes. I represent the actual Karara face of Pakistan. I'm very Karara, darling. Want to try? Coming back to your filmmaking, how did you start? How did it all begin for you? Now, It began in 1983. School में it was एक हमारा farewell event हो रहा था and I took the घर का camcorder. पहली दफ़ा वीडियो कैमराज आए थे पाकिस्तान and I recorded it. वहाँ से बस चस्का शुरू हुआ और फिर मैंने सारे family functions और ये वो record करते करते interest हो गया. And that's how it began. I think मैं generally बहुत एक shy और reserved इंसान रही हूँ ज़्यादातर. अब थोड़ा खुल रही हूँ. तो मेरे लिए एक तरीका था कहानियाँ बताने का और शेयर करने का. बहुत तन्हाई है ज़िंदगी में मेरीन. तुम शादी नहीं करना का इरादा है कि नहीं है? इस तरह के सवाल मैं कभी जवाब नहीं देती. I'm so sorry, darling. I'm really so sorry. You know. Okay. No, but with me it's just a thing, you know. कहना ना पूछना पड़ता है. यहाँ सब बहुत इंटरेस्टेड हैं शादी में. इवन अभी मैं मेकअप करा रही थी तो मुझसे पूछा जा रहा था. मैंने कहा 20-30 साल बाद इंशाल्लाह. Hi, that's a good answer at least. चलो, काश मैं भी कह सकती कि 20-30 साल बाद, बट जान मेरे पास वो कंफर्ट लेवल नहीं था. पता नहीं 10 साल भी जिंदगी और मिल जाएगी तो अल्लाह का शुक्र अदा करूंगी. वैसे डार्लिंग, I think you're just the right age, 56. Yes. Huh? Won't you like to see your auntie Nazi get married again? Love to. I can be a witness. And he's a friend and he's here. I could leave for 5 minutes. You could convince him. अच्छा आनंद, मेरे देखने वालों को वैसे बाय द वे आपकी शादी तो नहीं हुई ना? नहीं हुई. हाय, see, I knew it. 3 कुंवारे बैठे. But darling, तुमने खुद ही कहा कि तुम तो अगले 20-30 साल तक इंटरेस्टेड नहीं हो. हाँ, फिलहाल तो नहीं हूँ. I don't think he can wait 20-30 years.
I can't either. I think, darling, we waited far too long. Really, we like India and Pakistan, I tell you. We waited far too long. It's time now for a happy union of sorts, really. तुम्हारे क्या views हैं about India-Pakistan friendship? मेरे बहुत नेक व्यूज़ हैं. ऑब्वियसली जो ये कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि ये हमारा मसला ये है कि हमारा बहुत सुपरफिशियल लेवल पे होता रहा है कि दोस्ती और फिर एक इंसिडेंट हो जाए, कोई अटैक हो जाए कहीं पे, फिर एक मुसीबत आ जाती है. सो इट नीड्स टू बी अ ग्रेजुअल प्रोसेस. इट्स एक्सीलेंट कि शुरू हो गया है, बट इट शुड बी ऑल्सो रेसिप्रोकल. मतलब ये भी हमें नहीं सोचना चाहिए कि हाय अब इंडियन हर चीज़ इंडियन इन्फ्लुएंस के पीछे हम मर जाएं. वहाँ से अच्छी चीज़ें लें और वहाँ की जो लिमिटेशंस है वो भी समझें एंड वाइस वर्सा. So I think, but as he said, people to people contact बहुत ज़रूरी है. And यहाँ से भी लोग जाने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा. हाय, पता है मुझे दिल्ली का खाना बहुत पसंद है. I love the food there. मैं हमेशा कहती हूँ कि दिल्ली के खाने में कोई ख़ास बात है. I think वहाँ की मिट्टी, वहाँ के पानी में कोई ख़ास बात है. वैसे हमारे लाहौर का खाना भी बहुत मज़े का होता है. आप बम्बई आई नहीं है ना? हाय, मुझे मुंबई ले जाओ ना अपने साथ. मुंबई का खाना खिलाओ. दिल्ली का क्या खाना होता है? हाँ, अभी बोलो तो सही ना, एक दफ़ा इन्वाइट तो करो. हाँ बिल्कुल, आपको पहले ही इनवाइट कम ऑन जान, खोल के दिल खोल के इन्वाइट करो प्यार से. हाँ, अभी इंडिया पाकिस्तान की पीस प्रोसेस है और तुमने बिल्कुल सही कहा कि इट हैज़ टू बी रेसिप्रोकल. व्हाट यू सेड एंड आई कम्प्लीटली अग्री विद हर दैट इट हैज़ टू बी रेसिप्रोकल. अभी हम तो उनकी फिल्मों को इजाज़त भी दे दें, उनकी फिल्में आना भी शुरू हो जाएं, उनके चैनल्स भी आते रहें, हमारे चैनल्स वहाँ ना जाएं, हमारी फिल्में वहाँ ना जाएं. यू नो, इट हैज़ टू बी ऑन इक्वल टर्म्स. या इट शुड बी एब्सोल्युटली. मेरे देखने वालों के नाम आनंद, कोई पैगाम देना चाहो आज मेरे देखने वालों को, इतने सारे लोगों को, क्या कहना चाहोगे उनसे? नहीं, मोहब्बत का पैगाम है. वो तो मेरे लिए था मेरी जान. God, you're always mixing up address. ये डाकखाना यहाँ पर है, वो दूसरा वाला दो वहाँ पर. शिक्षा दो ना, सबक सिखाओ. बताओ. शर्मा गए. Come on, don't be shy. Don't be shy. I'm sorry to interrupt. No, really. Really, on a serious note, a message for my viewers. No, I don't have any new message. I just think that that we have new generations being born. We have people we've fought all these wars, but those are old people, and I think the new generation doesn't have those problems, and we have to make sure that they don't have those problems anymore. Really, I completely agree with you. I have a lot of hope. मैं आज के बच्चों को देखती हूँ, मुझे लगता है that they've risen above those old जो भी थे differences थे या biases थे या जो भी prejudices थे या जो भी थे. आज की generation is much evolved really, and I'm very hopeful. मीमी, आप कुछ कहना चाहें? I am so sorry, I was very serious in this interview, but मैं बिल्कुल ही unprepared आके एक बहुत ही एक हसीन जगह पे बैठ गई. तो I hope you enjoyed the program. अच्छा, और देखने वालों को ये खुशखबरी भी सुना दो that अब तुम जो फिल्म बनाओगी उसके अंदर कहानी पहले सुन ले, फिर डिसाइड कर लेना. अच्छा, कि मुश्किल कहानी है? हाँ, काफ़ी हद तक. हाय, मुझसे भी ज़्यादा जचे मुश्किल. ना कुछ. मुझसे भी ज़्यादा मुश्किल शायद. आनंद, तुम्हारे ख्याल में मैं मुश्किल हूँ क्या आसान हूँ? काफ़ी आसान. Well, darling, you know, my philosophy in life is always make it easy for them initially. शुरू में आसान है, हाँ, आगे बड़ी मुश्किल है बाबा, बड़ी मुश्किल. Anyway, मुझे यकीन है कि आज मेरे इस हसीन से ड्राइंग रूम में मेरे इन दो हसीन से मेहमानों को देखकर आपको बहुत खुशी हुई होगी. आनंद से मिलके, आनंद पटवर्धन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए, मुझे बहुत खुशी हुई. मेरी जान मेहरीन जब्बार, always such a pleasure really to see you. Thank and great having you on the show in my drawing room. आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे बहुत ना याद कीजिएगा क्योंकि फिर मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है. बस दुआओं में याद रखिएगा प्लीज़. और अगले हफ्ते इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी दो बहुत ही exciting personalities के साथ, looking as beautiful as I always do, and people say that I'm full of myself, but I am. What to do? ऐसे हुस्न के साथ तो फिर दिमाग ख़राब हो ही जाता है. Anyway, अपना ख्याल रखिएगा, and until next week, खुदा हाफिज़. नवाज़िश.